Yes, Mahatma Gandhi wanted to unite the nation. So on 31 January 1930, he sent a letter to Viceroy Irving, in which there was 11 demand was written. Okay, 11 demand was written. It was related to the all the community of the country. जो 11 डिमांड्स उन्होंने इरविन को भेजे थे, उसमें जनरल इंटरेस्ट के सारे लोगों से डिमांड थे that were related to from the industries to peasants and from different sections. ये wide ranging डिमांड था, ठीक है. But सबसे most important demand was to reduce the taxes of the salt. ठीक है, टैक्स जो सॉल्ट पे लिया जाता था, उससे सॉल्ट के टैक्स को रिड्यूस करना, ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड था. ठीक है, एंड क्योंकि दिस वाज द यूज फॉर एवरीवन, हर कोई को ये यूज करना था सॉल्ट, एंड हेवी टैक्स वाज इम्पोज ऑन दिस on the salt. It was an essential item for the food. So the tax on salt and the government monopoly over these productions, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive phase of British rule. So the tax had, that heavy tax was imposed on the salt, and the government were having monopoly because it had been clear that only British government can make the salt. So Mahatma Gandhi wanted to show the oppressive face of the Britishers. So he decided to break the salt law, है ना. महात्मा गांधी उसने एक अल्टीमेटम, एक लेटर भी लिखा था, and he in his letter he had written that if their demand were not fulfilled, in that case on 11th March he would launch a civil disobedience movements. ठीक है, जब उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को लॉन्च करेंगे. द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. इरविन वाज अनविलिंगली टू negotiate. So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. Okay, Lord Irwin had not given the attention on that demand of Mahatma Gandhi. He was not interested to negotiate with Mahatma Gandhi and other Congress leaders. So Mahatma Gandhi has declared that he is going to launch his famous civil disobedience movement. He will break the civil law. For this region, he had started his salt march. Okay, with the help of with his 78 people, and covered a distance of 240 miles. So Gandhi ji had started this movement from Sabarmati Ashram, which was in Gujarat, and went to Dandi. Dandi, that was 10 miles away from that place. He traveled, not 10 miles. It was 240 miles. It was 240 miles from his ashram, from his Sabarmati ashram. So he traveled 24 days. One day he traveled for 10 miles. हर दिन वो 10 मील चला करते थे, और उन्होंने 24 दिनों तक पैदल चलकर वो डांडी पहुंचे थे. Thousands came to hear Mahatma Gandhi whenever he stopped. At night he had to take a break in a village. गांव में उन्हें रुकना पड़ता था, और जहां भी वो रुकते थे वहां पर हजारों लोग उनकी बातों को सुनने आ जाया करते थे. And on that place, Gandhi ji was explaining that what is the meaning of Swaraj. आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ा कि स्वराज का मतलब जो था वो अलग अलग था. So आपने देखा कि किसानों के लिए स्वराज का मतलब रिडक्शन और टैक्स था, whereas टी प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब अपने घरों को वापस लौटना था. At some places you have seen that स्वराज को लेकर के लोग महात्मा गांधी के नाम पे वायलेंस हो रहा था. तो ये सारी चीजें लोगों को स्वराज का मतलब क्लियर नहीं था.
तो ये 24 दिनों तक महात्मा गांधी जिस जिस गांव में रुकते थे वहां पे लोगों को स्वराज का मतलब वो क्लियर करते थे, ठीक है, कि क्या उनका स्वराज है और कैसे उन्हें पीसफुली उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करना है, उसे डिफाई करना है। ऑन 6 अप्रैल he reached Dandi and Sherwanili violated the law manufacturing salt by boiling seawater. On 6 April, Mahatma Gandhi reached Dandi and there he made salt by boiling the seawater. Seawater को boil करके उन्होंने salt बनाया. Just marked the beginning of civil disobedience movement. This was civil disobedience means I will not obey the law which has been made by the Britishers. तो इस चीज को देखकर इस तरह से सॉल्ट लॉ के द्वारा उन्होंने सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की. एंड हाउ फार दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. How far this movement was different from non-cooperation movement? People now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 22, but also to break colonial laws. Our people were not denying to cooperate with the Gandhis. They want to cooperate the Gandhi. They want to refuse the cooperations with the Britishers as they had done in 2021 to 22, but also want to break the colonial law. Yeah, they were not going against the British. They were not opposing the British rule, but they were also opposing. They were also breaking the colonial law which was made by the Britishers. Thousands in different parts of the country broke the salt law. Many of the people started breaking salt law. ठीक है, salt law को उन्होंने break किया, manufactured salt and demonstrated in the form of in front of the government salt factories. They started making salt by seawater, breaking the law which was made by the Britishers, and they were demonstrating in front of the British government salt factories. जो British government की जो salt factories थी उसमें वो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साल्ट फैक्ट्री में वो के सामने वो उसे प्रदर्शित भी करते थे, उसे विरोध करते थे. Besides this, they started boycotted foreign clothes. ठीक है, as the movement spread, they started boycotting clothes as they have done in non-cooperation movement. So now they had also started boycotting clothes, picketing shops, liquor shops, and peasants refused to pay revenue, chowkidari tax. Their peasants started to refuse to pay the taxes which was imposed by the Britishers, and village officials resigned, and in many places forest people violated forest law, going into reserve forest to collect wood and graze cattle. As you have studied in class 9, there was a forest law. There was a reserve forest in which nobody can go there. Okay, for taking fuel, for grazing their animals. तो now they have started to do all that. ठीक है, वो अब उन लोगों ने क्या किया कि फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना शुरू कर दिया और रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करने लगे और वहां जाकर वो फ्यूल कलेक्ट करने लगे, लकड़ियां लाने लगे, अपने जानवरों को चराने लगे. तो they were going against the British rules. Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. अब इनके जो इतने तेजी से ये जो डेवलपमेंट होता जा रहा था इस मूवमेंट का, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. उन्होंने कांग्रेस लीडर को ये अरेस्ट करना शुरू कर दिया. दिस लीड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस. जिससे क्या हुआ, अब क्लासेस होने लगे. ठीक है, वायलेंट क्लासेस होने लगे. व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar, facing armed guard and police firing. Many were killed. When Abdul Ghaffar Khan was arrested, then many people revolted against them. Okay, they were started facing police firing and armed guard. जो उनकी गाड़ियां, पुलिस की जो पैक्ड गाड़ियां होती थी, बख्तरबंद गाड़ियां जिन्हें कहा जाता था, तो उन सब वो झेल रहे थे, पुलिस फायरिंग को झेल रहे थे. But they were revolting against the Britishers.
A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial worker in Solapur attacked police post. After 1 month, when Mahatma Gandhi was arrested, then industries were started attacking on police post, municipal building, law courts, and railway stations. All structures that symbolize British rule. जो वैसे सारे बिल्डिंग्स जो कि ब्रिटिश रूल को दिखाता था, जब ब्रिटिश रूल का सिंबल था, उन सब पर इंडस्ट्रीज जो थे वो अटैक करना शुरू कर दिए. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahi were attacked, women and children were beaten, about 1 lakh people were arrested. Now, a government was frightened with all this situation because the people has started attacking on their buildings. So what they have done, they have started the policy of brutal डिप्रेशन. अब उन्होंने क्रूरतापूर्ण ढंग से उसे दबाने लगे. अब जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो शांतिपूर्ण ढंग से भी जो विरोध कर रहे थे, उन पर अटैक किया जा रहा था, बच्चे और औरतों को पीटा जा रहा था, एंड अबाउट 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट कर लिया गया. So 1,000 people were arrested. In such a situation, Mahatma Gandhi was again to decide to call off the movement and enter into a pact with Irwin on 5th March 1931. By this Gandhi-Irwin pact, Gandhiji consented to participate in the Round Table Conference. इस situation में महात्मा गांधी had decided to call off this movement. फिर से इस movement को उन्होंने वापस लेने का decide किया. और ये डिसाइड किया कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो उस पैक्ट में शामिल होंगे, जो कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी के साथ हुआ था. अकॉर्डिंग टू दैट, महात्मा गांधी हैड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लंदन गए. दे हैड पार्टिसिपेटेड, he had participated that round table conference, but negotiation broke down and he returned back India by getting disappointed. वो डिसअपॉइंटेड होकर के वो वापस इंडिया आ गए, बट यहाँ सारा सिचुएशन बदल गया. जब वो इंडिया में आए तो he discovered that government had begun a new cycle of repression. Government had discovered begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. ठीक है, and the Congress had been declared illegal. कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया गया था. एंड अब बहुत सारे ऐसे मेजर्स लाए गए थे, ऐसे तरीके अपनाए गए थे ताकि अब कोई मीटिंग ना कर सके, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सके, कोई तरह का बायकॉट ना कर सके. तो such type of measures were taken by the Britishers. When Mahatma Gandhi came India, he had seen all the things. His important leaders were arrested and many steps were taken to prevent the meetings and processions and boycott. अब वो कोई कर नहीं सकते थे. कांग्रेस पार्टी वर डिक्लेयर एट इलीगल पार्टी. तो ये सारी चीजें हो गई थी. विथ ग्रेट एप्रीहेंशन, महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movements for over a year. The movement continued, but by 1934 it lost its momentum. फिर उन्होंने वापस आकर के फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स लाया, और काफी आशंकाओं से भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद सारा सिचुएशन ही बदल गया था. Besides this, he decided to relaunch this movement. उन्होंने लाया और फिर 1934 तक ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूड रहा. Now, next point is that how participants saw this movement. So, students, do you have any problem in this topic, Salt Satyagraha? Students, Salt Satyagraha and civil disobedience movements. This is very familiar to everyone. So if you have any problem, you can share me. So, okay. But you have to get the topic, because question will be from this frame
by these topics. So one or two questions just I want to ask from these topics. So if you're interested, then you can give the answer. There is very little bit answer is there. One line question just I'm going to ask regarding this topic. So my question is that who framed Swaraj Party? Students, who framed Swaraj Party? Just I have told. Just I have told. Unmute yourself and give the answer. Chittaranjan Das and Motilal Nehru. Yes, Chittaranjan Das and Motilal Nehru. ठीक है. Why he wanted to form this Swaraj Party? Why he formed this party? क्यों उन्होंने बनाया था स्वराज पार्टी? बोलो. क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अंदर से चेंज करना चाहते थे. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज साइमन कमीशन रिजेक्टेड इन इंडिया? व्हाई वाज साइमन कमीशन वाज रिजेक्टेड इन इंडिया? एनीवन? Why was Simon Commission? Because all its members were English. Yes. Yeah, one more student. Not any Indian member was there. There was no any Indian member were there. Nice. Okay. Okay, next questions. Just very small questions. How long was Gandhi? How long was Dandi March? And how much time did it take? How long was Gandhi March? Dandi March, sorry. How long was Dandi March? Bolo, just I've explained. From Sabarmati Ashram, just I'm adding one line, 240 miles. 240 miles. How long was Dandi March? You have to give 240 miles. And how much time did it take to cover that distance? कितने दिन लगे? 24 days. 24 days. Yes, nice. So, very good. Students, you have to give the answers. Then in which roundtable conference Mahatma Gandhi participated? In which roundtable conference? Second round table conference. Second round. Second round in 1931. December 1931, he participated in the second roundtable conference. जैसा मुझे लग रहा है सैंपल क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स भी है ना? ऑब्जेक्टिव कुछ दिया हुआ है ना? कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन. नो मैम. नहीं ऑब्जेक्टिव्स. मैम ऑब्जेक्टिव नहीं है. चलो ठीक है. तो हाउ पार्टिसिपेट दिस मूवमेंट? देखो 2 चैप्टर तो पढ़ना है बेटा, दोनों चैप्टर समझ लीजिए. हाँ, तो समझे रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा. थोड़ा अपने मन से भी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सुने रहोगे तो अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो इन योर ऑन लैंग्वेज. So if the point is correct, nobody will cut your marks. So let us now look at the different social group that participated in the civil disobedience movements. Why did they join the movement? What were their ideals? Why did Swaraj mean to them? So as you have studied in non-cooperation movement, many people participated in, many social groups participated in this movement. Like that, in civil disobedience movements, many people participated in this movement. तो इनकी क्या सोच थी? Why they had joined this movements? You have to study all that about them one by one. So in the countryside, rich peasants community like the Patidar of Gujarat and the Jat of Uttar Pradesh were active in this movement. Being producer of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. So as their cash income, the trade depression, as the cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue on time.
and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. Yes, this was the condition of the peasant community. Peasant community, Patidar of Gujarat and the Jat of Uttar Pradesh. They were active in this moment because they were growing commercial crops का grow करते थे, and they were hardly they were getting very small amount of money. बहुत कम पैसे उन्हें मिलते थे. ट्रेड डिप्रेशन हो गया था, उसका वो परिणाम झेल रहे थे. पैसे सामान के दाम गिर गए थे. जैसे जैसे उनका कैश इनकम खत्म होता जा रहा था, they didn't want to pay the revenue or to the British governments, so they started demanding to reduce the taxes. टैक्स डिमांड करने का, और वो चाहते थे कि वो गवर्नमेंट को पैसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे, एंड वो चाहते थे कि रेवेन्यू को भी, जो उनका रेवेन्यू का डिमांड है वो उनको कम कर दिया जाए. तो इसके लिए चारों तरफ असंतुष्टि का माहौल था. दिस रिच पीजेंट्स बिकम enthusiastic supporter of the civil disobedience movement, organizing their community, and at time facing reluctant members to participate in the boycott program. For them, the fight of Swaraj was a struggle against high revenue, but they were deeply disappointed when the government was called off in 1931 without the revenue rates being revived. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. दूसरी ओर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, उन लोगों ने भी बायकॉट मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया था. लेकिन एज यू स्टडी इन 1931 महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को वापस ले लिया था. तो इनके जो हाई टैक्सेस के डिमांड थे वो कम भी नहीं हुआ और वापस ले लिया गया. इसलिए दोबारा जब 1932 में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो लोगों ने पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दिया. बिकॉज द पीजेंट वर इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द टैक्सेस. Okay, peasants were interested to reduce the taxes. When the taxes were not reduced, they had not taken interest in the next movement, which was started in 1932 by Mahatma Gandhi. The poorer peasantry were not interested in the lowering of the revenue demand. The poorer peasantry were not interested in the lowering of revenue demand. Many of them were small. Many of them were small tenants cultivating land. They had tented from landlord. As the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. जो करे गरीब किसान थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनका अपना जमीन नहीं था. वो टेनेंट्स के जमीन पर खेती करते थे. ठीक है, जैसे जैसे उनका में डिप्रेशन बढ़ा, पैसे कम होने लगे, तो जो स्मॉल टेनेंट्स थे उन्हें डिफिकल्ट हो रहा था अपने रेंट को पे करना, उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था. दे वांटेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू रिमिटेड. अब वो चाहते थे कि जो लैंड को वो किराए पर लेकर के उस पे खेती कर रहे थे और उससे वो अपने टैक्स पे कर रहे थे. लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति खराब हो गई तो उनमें उस जमीन पर रेंट देने के भी पैसे उनके पास नहीं थे. इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लैंडलॉर्ड से जमीन की ही मांग करनी शुरू कर दी. ठीक है, वो चाहते थे कि अनपेड रेंट जो है वो रेंट वो नहीं पे किए, वो लैंडलॉर्ड्स उसे हटा दें, उसे माफ कर दे. दे ज्वाइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट often led by the socialists and the communists, appreciative of raising issues that might upset the rich peasants and landlord. The Congress were unwilling to support no rent campaign in most places, so the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब किसान जो चाहते थे कि जमींदार जो हैं वो उन्हें टैक्स, उनके जो रेंट है वो उन्हें माफ कर दे. ठीक है, और दूसरी ओर जो कांग्रेस जो थी वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे बड़े बड़े जमींदारों से इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा था. ठीक है, बड़े बड़े जमींदार जो थे उन्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे थे. सो दे वर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट. कांग्रेस वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैटर ऑफ द पीजेंट्स.
वो पीजेंट के मैटर में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पीजेंट को सपोर्ट करेंगे तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो है वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, एंड कांग्रेस नीड्स मनी टू फॉर दिस रिवोल्ट, फॉर दिस मूवमेंट। उन्हें अपने मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे उन्हें कहाँ से मिलते, बड़े बड़े जमींदारों से पैसे मिलते थे। तो वो उन्होंने इस गरीब किसानों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस? बिजनेस क्लासेस की क्या थे? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। 1 minute. Is merchant industry and made a huge profit and become powerful, keen on expanding their business. They now reacted against colonial policies that restricted business activity. जब बिजनेस क्लासेस की बात अगर हम करें, तो बिजनेस क्लासेस में आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारे जो लोग थे वो व्यापार में लगे हुए थे। व्हेन ब्रिटिशर्स वर इंपोर्टिंग देयर गुड्स, इंपोर्टिंग इंडियन गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक चाइना एंड अदर प्लेसेस, तो इसमें बहुत सारे इंडियंस लगे हुए थे और वो अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। बाद में आपने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी इसी इनकम से, इसी पैसे से उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की थी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि इंडस्ट्रीज वर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड दे बिकेम पावरफुल। नाउ दे वांटेड टू गो अगेंस्ट द colonial policies that restricted business activity। वैसे बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने वाली जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसके वो अगेंस्ट जाना चाहते थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। दे वांटेड प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट import of foreign goods. Yes, foreign goods, as you have studied that, ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें बन रही थी, जो कपड़े बन रहे थे, उन सारे को इंडिया में लाया जा रहा था। ठीक है, इंडिया में लाया जा रहा था। तो ब्रिटिश बिजनेसमैन जो थे वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। They wanted to go against this import policies, and they wanted to protect their own business, and so वो चाहते थे कि import को discourage किया जाए। The organized business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927, led by prominent industries like Purushottam Thakur Das and G.T. Birla. The industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. बिजनेसमैन जो थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जब ये मूवमेंट फर्स्ट टाइम लाया गया था तो वो चाहते थे कि कॉलोनियल कंट्रोल को इंडिया के इंडस्ट्रीज से हटाया जाए। ठीक है, इंडिया पर जो कॉलोनियल कंट्रोल है, इसलिए इंडस्ट्रीज जो थे वो कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक किए। उन्होंने इंडिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा था, उसके लिए वो इसके अगेंस्ट थे। इसलिए जो पहली बार जो फर्स्ट बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया तो ये बिजनेसमैन ने इसमें पार्टिसिपेट किए। तो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम when colonial restrictions on business would go longer exist, trade and industry would flourish without constraint. But after the failure of round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruptions of business as well as the growing influence of socialism among all the younger members of the Congress. लेकिन as you have seen that in second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था, जब ये फेलियर हो गया, आपने देखा कि उसके पहले महात्मा गांधी ने अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था। जब वो वायलेंट कैरेक्टर ले रहा था, आपने देखा कि जो भी इंडस्ट्रीज थे दे वर अटैकिंग ऑन द पुलिस, ब्रिटिश बिल्डिंग्स, ऑन पुलिस पोस्ट। तो ये सब देखकर महात्मा गांधी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लिया था। तो जब इन्होंने वापस ले लिया था तो इनके जो ये बिजनेसमैन जो थे उन्होंने उनको अब उनमें अब वो उत्साह नहीं रह गया था।
अब उन्हें आशंका का माहौल था कि अब मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ जाएगा एंड बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, और साथ में सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। जो यंगर मेंबर्स जो थे कांग्रेस के बीच, उनमें सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था। सोशलिज्म का मतलब ये था कि सारे लोगों को एक समान दर्जा, वर्कर और इंडस्ट्रीज के बीच पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना, तो ये सब चीज था। तो अब लोगों को लग रहा था कि सोशलिज्म का डेवलप, ये भी एक इंडस्ट्रीज के लिए खतरा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थे वो ज्यादा पैसे वाले लोग थे और देवर पेइंग लेस टू द वर्कर्स। तो वो सब चीज वो नहीं चाहते थे कि इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे। तो बच्चों टाइम हो रहा है, अगला क्लास में मैं अगला पॉइंट्स देखूंगी, तो ट्राई टू अटेंड द क्लास। ओके, जस्ट आई एम एंडिंग द मीटिंग। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम?